Hello students, we were doing infinite series. Students, in our previous lectures, we did D'Alembert ratio test, and on the basis of D'Alembert ratio test, we did some numericals. So here we are doing more numericals on D'Alembert ratio test. So what was D'Alembert ratio test? In D'Alembert ratio test, we will check convergence or divergence of positive term series. If summation an is a positive term series, then limit n approaches infinity, an upon an plus 1, if it is greater than 1, then the series is convergent. If it is less than 1, then the series is divergent. And if the limit of an upon an plus 1 when n approaches infinity is infinity, then series again convergent. And if the limit n approaches infinity, an upon an plus 1 is 1, then the test is inconclusive. So let us continue with more problems on D'Alembert ratio test. Test the convergence of the series. So series is of the type 1 plus 2 to the power p upon 2 factorial plus 3 to the power p upon 3 factorial plus so on. So अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट टर्म क्या है 1 to the power p, second is 2 to the power p, third is 3 to the power p, fourth is 4 to the power p. So nth term is n to the power p. This is about numerator. Now denominator, it is 1 to the power 1 factorial, 2 factorial, third term 3, fourth term 4 factorial. So nth term is n factorial. So an is n to the power p upon n factorial. An plus 1 is replace n with n plus 1. So we have n plus 1 to the power p upon n plus 1 factorial. So take ratio an upon an plus 1. So this is an n to the power p n factorial, an plus 1. So it is n plus 1 to the power p, n plus 1 factorial, and n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial. So n factorial cancel out. So we are left with n plus 1 n to the power p upon n plus 1 to the power p. So n to the power p common out from denominator. We have n to the power p, 1 plus 1 by n to the power whole p. So this cancel out. Now taking limit. When n approaches infinity, we have limit as infinity because we are left with n, और यहाँ पे आपके पास 1 plus 1 to the power n है, यहाँ पे 1 plus 1 to the power 1 plus 1 by n to the power p. So it is 1 plus 1 by n to the power p minus 1. When n approaches infinity, it becomes infinity. And by D'Alembert ratio test, if this ratio is infinite, then summation an is convergent. So this completes the problem. Next question. 5 plus 5 upon 2 plus 5 plus 5 square upon 2 square plus 5 plus 5 cube upon 2 cube plus 5. So on. So let us check for nth term. First term is 5 to the power 1, second term is 5 to the power 2, third term is 5 to the power 3, fourth term is 5 to the power 4. So nth term is 5 to the power 5. Next देखो, 2 to the power 1 plus 5, 2 to the power 2 plus 5, 2 to the power 3 plus 5. So what is the nth term? Third term is this, fourth term में आ जाएगा 2 to the power 4 plus 5. So nth term में क्या आएगा? 2 to the power n plus 5. What is an plus 1? Replacing n with n plus 1, we will get this. So here we have with the ratio an upon an plus 1. So common out 5 to the power n from here. So you are left with 1 5 here. यहाँ पे common out 2 to the power n. So you have 2 to the power n, अगर हम common ले लें ऊपर से, so you are left with 1 2 plus 5 upon 2 to the power n. और यहाँ नीचे से अगर 2 to the power n कॉमन लें तो it is 1 plus 5 upon 2 to the power n. So 2 to the power n cancel out. So we have here it is 2 plus 5 upon 2 to the power n, और डिनोमिनेटर में it is 1 5 times, ये 5 भी है, 5 times 1 plus 5 upon 2 to the power n. So taking n approaches infinity. So 2 to the power infinity is infinity, 5 upon infinity is 0. So it is 2 plus 0, और डिनोमिनेटर में it is 1 plus 0.
So you have 2 upon 5. So which is less than 1. So by D'Alembert ratio test, the series is divergent if ratio is less than 1. Next is third question. Summation 2 to the power n into n factorial upon n to the power n. So an is given to you 2 to the power n. अब आपको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है. It is given to you summation an. So an is this. What about an plus 1? Replacing n with n plus 1. So we have 2 to the power n plus 1 into n plus 1 factorial. Division में n plus 1 to the power n plus 1. Let us solve this. n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial. So cancel out हो जाएगा आपके पास. So after cancelling the terms, आपके पास n factorial cancel with n factorial, 2 to the power n cancel with 2 to the power n, and you are left with n to the power n into 2, and here you have n plus 1, and in the numerator you have n plus 1 to the power n plus 1. So 1 cancel. So you have this 1 by 2 outside, n plus 1 to the power n upon n to the power n. Let us take n to the power n common. So n to the power n जब आप common लोगे, you have 1 plus 1 upon n to the power whole power n. So this cancel with this. So you have the result. We have result limit n approaches infinity. You have to remember this result. So write down this result to remember. Limit n approaches infinity, 1 plus a upon n to the power n is always equal to e to the power a. So यहाँ पे अगर आप देखो a जो है वो 1 है, so it is e to the power 1. So it is e by 2. Clear? So अगर ये e by 2 है, e by 2 को अगर आप देखो, this is greater than 1. e is 2.718 something. So it is divide करोगे, it is greater than 1. So if the ratio is greater than 1, then by D'Alembert ratio test, summation an is convergent. Next question. अब आपके पास सीरीज किस तरह की है? एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में एक्स क्यूब, थर्ड टर्म में एक्स टू द पावर 4 और फोर्थ टर्म में एक्स टू द पावर 5. तो एक इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट टर्म में 2 था, सेकंड में 3 था, थर्ड में 4, फोर्थ में 5. तो n में क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1. सो an इज x टू द पावर n प्लस 1. अब आप देखो डिनोमिनेटर में इट इज़ 2, 3, 4, 5. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4, फोर्थ टर्म में 5. तो n टर्म में n प्लस 1. अब नेक्स्ट देखो, दिस इज 2 इंटू रूट 1. वी कैन राइट फर्स्ट टर्म में रूट 1, सेकेंड टर्म में रूट 2, थर्ड टर्म में रूट 3, फोर्थ टर्म में रूट 4. सो n टर्म में रूट n. सो व्हाट इज n प्लस 1 नाउ? टेक n टू n प्लस 1. सो रिप्लेस करेंगे इसमें n को n प्लस 1 से. सो इट इज x टू द पावर n प्लस 2. डिवीजन में n प्लस 2 अंडर द रूट n प्लस 1. So we have the ratio an upon an plus 1 as this. So यहाँ पे आप x to the power n plus 1 अगर कैंसिल करें यहाँ पे, तो you are left with 1x in the denominator. And rest यहाँ से n कॉमन ले लो, this cancel with this. नीचे से n कॉमन लो तो it is 1 plus 2 upon n, and here it is 1 plus 1 by n. रूट n ऊपर से कॉमन लोगे तो it is under the root 1 plus 1 by n, और रूट n नीचे से, तो this cancel out. So now taking limit n approaches infinity, this is 0, 2 by infinity is 0, 1 by infinity is also 0. So it is 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, and it is under the root 1 plus 0 is again 1. So you are left with only 1 by x. So convergence or divergence now depend upon 1 upon x. So 1 upon x, it is by D'Alembert ratio test, this summation an is convergent if 1 by x is greater than 1, that is x is less than 1, and divergent if 1 by x is less than 1, that is x greater than 1. But for x equal to 1, the test fails. So let us now calculate what is an for x equal to 1.
फॉर x इक्वल टू 1 an इज 1 अपॉन अंडर द रूट n प्लस 1. सो अगर आप देखो डिनोमिनेटर में ही सारी n की पावर्स हैं, सो n की पावर डिनोमिनेटर में आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ अब आपने कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th लगाना है. चूज बी एन एस 1 अपॉन n टू द पावर 3/2. So calculate ratio an upon bn, limit n approaches infinity, so it is 1. ठीक है, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी n अप्रोचेज इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ जो होगा यहाँ पे दैट इज ये आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा. सो यू हैव ओनली 1. सो इट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th, summation an and bn behave alike. So summation bn is summation 1 upon n to the power 3/2, which is convergent by p series test. So therefore summation an is convergent. So let us now write the complete result. मीन्स आप समीशन an कन्वर्जेंट कब होगा, जब एक तो आपने किया था ऊपर x लेस देन 1 और यहाँ x इक्वल टू 1 के लिए भी कन्वर्जेंट है. सो वी विल राइट द सीरीज का कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द कंप्लीट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5th. Question 5th. Series is of the type 1 upon 1 by p plus 1 upon 3 to the power p into x, 1 upon 5 to the power p into x square and so on 1 upon 2n plus 1 to the power p into x to the power n. So अगर आप देखो this is the nth term given to you. So an is x to the power n, 2n plus 1 to the power p. So what is an plus 1? So replacing n with n plus 1 we have x to the power n plus 1 upon 2n plus 3 to the power p. So let us write the ratio an upon an plus 1. So यहाँ से x to the power n cancel. So we are left with 1 by x. Next यहाँ से 2n to the power p common out. So we have 1 plus 3 upon 2 to the power n to the power p. और यहाँ से 2 to the power n p common out. So we are left with 1 plus 1 upon 2 to the power n to the power p. So this both cancel. और जब आप लिमिट लोगे n approaches infinity, 3 upon infinity is 0. So 1 to the power p is 1. 1 plus 1 upon infinity is again 0. 1 to the power p is 1. So you are only left with 1 by x. So it will now depend upon 1 by x. So by D'Alembert ratio test, summation an is convergent if 1 by x is greater than 1, that is x is less than 1, and divergent if 1 by x is less than 1, that is if x is greater than 1. Let us now check what happens when x is equal to 1. When x is equal to 1, the D'Alembert ratio test fails. So we are now left with a n x को 1 ले लो 1 अपॉन 2n प्लस 1 टू दी पावर p. अब यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में है वो n की पावर है. सो टेकिंग n टू दी पावर p कॉमन आउट, आप ये देखते ही अब आपको पता चल जाना चाहिए जहाँ भी डिनोमिनेटर में p की पावर आ जाए टेक bn इमीडिएटली. सो bn इज 1 अपॉन n टू दी पावर p को देखते हुए. सो टेक रेशो an अपॉन bn, taking limit n approaches infinity. When we take n approaches infinity, 1 by n is 0. So here you have 2 to the power p, which is non-zero and finite. If it is non-zero and finite, then by comparison test form 5th, summation an and bn behave alike. So let us now check convergence of summation 1 upon 2 to the power p. So it will converge for p greater than 1 and diverge for p less than or equal to 1 by p series test. So यहाँ पे भी एक कंडीशन आ गई. So अब आप कंप्लीट रिजल्ट कैसे लिखोगे जो आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया? You will have to write that thus summation an converges whenever x is less than 1 and diverges for x greater than 1, and for x equal to 1 summation an converges for p greater than 1 and diverges for p less than or equal to 1. So this is the complete solution. Next question, test the series summation under the root n square plus 1 minus n into x to the power 2n for x greater than 0.
let an is given to you. This is an, summation an. So first we have to rationalize it. यहाँ आपके पास जो न्यूमरेटर है इसमें से हम ये n जो है इसको कैंसल आउट करेंगे. सो रेशनलाइज जब आपने किया, सो इट इज़ n स्क्वायर कैंसल विद n स्क्वायर. सो यू हैव 1 अपॉन अंडर द रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n x टू द पावर 2n. सो ये अब उसी तरह से आ गया जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे, x की पावर 2n अपॉन द टर्म्स इन n. सो नेक्स्ट find an plus 1. Now the ratio an upon an plus 1. अब आपके पास रेशो जब आप लोगे यहाँ पे x टू दी पावर 2n और x टू दी पावर 2n कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा. अब यहाँ से आप n प्लस 1 को कॉमन आउट लोगे, यहाँ बाहर आ जाएगा n प्लस 1 क्योंकि रूट में है. और यहाँ पे आप लिखोगे अंडर दी रूट 1, यहाँ 1 रह जाएगा जब आप कॉमन लोगे इसको, प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर. और यहाँ से भी कॉमन लिया तो इट इज़ 1. नीचे से भी आप n को कॉमन लो, ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 है तो यू आर लेफ्ट विद अंडर द रूट 1. n स्क्वायर कॉमन लोगे तो n जब बाहर लिखोगे तो n ही लिखोगे क्योंकि n स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर द रूट है तो रूट के बिना लिखोगे तो इट इज़ n. 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस अब यहाँ 1. ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ से n कॉमन ले लो. जब आप यहाँ से कॉमन लोगे n तो ये क्या रह जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 बाय n. फिर नीचे वाला जो n है आपका वो कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से ये n कॉमन लोगे तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 1 प्लस 1 बाय n. नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये 0 इट इज़ 1, ये 0 1, 1 प्लस 1 2, ये 0 1, 1 प्लस 1 2, ये भी कैंसिल 2 बाय 2 1. सो यू आर ओनली लेफ्ट विद 1 बाय एक्स स्क्वायर. सो जब आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया तो ऑल विल डिपेंड ऑन दिस एक्स स्क्वायर. सो द सीरीज बाय डिलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, द सीरीज समीशन an इज कन्वर्जेंट वेन एवर 1 बाय एक्स स्क्वायर इज greater than 1, that is x square is less than 1, and divergent if x square is 1 by x square is less than 1, that is x square is greater than 1. So what happens when x square equal to 1? So ratio test fails. अब आपके पास an ये आ गया, ठीक है. अब an जो आपके पास आया इसमें देखो आप डिनोमिनेटर में n की टर्म्स हैं तो टेक आउट n कॉमन, यहाँ पे n कॉमन ले लिया क्योंकि n कॉमन आता है यहाँ से, तो इट इज़ 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर अंडर द रूट प्लस 1. सो 1 बाय n. अब डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास पावर होगी आप इमीडिएटली bn को वही चूज करोगे. सो bn इज 1 बाय n. सो टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an अपॉन bn. सो यू आर ओनली लेफ्ट विद, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाय n 1 बाय n. सो यू हैव अंडर द रूट 1 प्लस 1, सो 1 बाय 2. So which is non-zero and finite. So therefore by comparison test form 5th an and bn converges or diverges together. But summation bn is divergent by p series test. Therefore summation an is divergent. So let us now write the complete result. So complete result ये है कि x equal to 1 or you can say x square equal to 1 और x square greater than 1 के लिए ये divergent था और कन्वर्जेंट किसके लिए था एक्स स्क्वायर लेस देन 1 के लिए. द समीशन an इज कन्वर्जेंट इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन x टू द पावर n अपॉन 3 प्लस अंडर द रूट n फॉर ऑल x विच आर ग्रेटर देन 0. सो इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ऑल x आर पॉजिटिव गिवन टू you. So an is given already, this is summation an. What is an plus 1? Replacing n with n plus 1 in nth term, you have x to the power n plus 1, 3 plus under the root n plus 1. So now take ratio an upon an plus 1. So you have x to the power n cancel हो जाएगा. यहाँ पे अब आप क्या करोगे, रूट n कॉमन ले लो, ठीक है, नीचे से भी रूट n कॉमन ले लो. सो जैसे ही आप रूट n कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास 3 अपॉन रूट n, 3 को डिवाइड करोगे रूट n से और अंडर दी रूट n प्लस 1 को अगर रूट n से डिवाइड करते हो
अंडर द रूट n प्लस वन डिवाइड बाय रूट n, तो ये रूट n कॉमन ले लो, सो इट इज़ n प्लस वन अपॉन n अंडर द रूट, सो इट इज़ 1 प्लस 1 बाय n अंडर द रूट, ये आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ अंडर द रूट 1 प्लस 1 बाय n। सिमिलरली जब आप रूट n यहाँ से कॉमन लोगे तो इट इज़ 3 अपॉन रूट n, और रूट n को जब डिवाइड करोगे रूट n से इट इज़ 1। सो यू आर लेफ्ट विथ दीज टर्म्स। नाउ टेकिंग लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, जैसे ही आप n अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी को, 3 अपॉन इन्फिनिटी इज़ 0, यहाँ से 1 बाय इन्फिनिटी इज़ 0, यहाँ से 3 बाय इन्फिनिटी इज़ अगेन 0, सो यू हैव 0 प्लस 1 अपॉन 1, सो इट इज़ 1, so it is 1 by x. Now again convergence or divergence will depend upon value of x. So by D'Alembert ratio test, summation an is convergent whenever 1 by x is greater than 1, that is x is less than 1, and divergent whenever 1 by x is less than 1, that is x is greater than 1. For x equal to 1, ratio test fails. So immediately let us see what is an. सो एक्स टू दी पावर है, एक्स को 1 लिखोगे तो ए एन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस रूट एन। इमीडिएटली टेक कॉमन पावर ऑफ एन। यहाँ पे आप अगर देखो ए एन में डिनोमिनेटर में एन चला गया, तो आपने क्या करना है, रूट एन को कॉमन ले लिया फिर से, सो इट इज़ 3 अपॉन रूट एन प्लस 1। सो टेक बी एन एज 1 अपॉन रूट एन, डिवाइडिंग ए एन अपॉन बी एन, वी हैव 1 प्लस 1 upon 1 plus 3 upon root n. So when n approaches infinity, this is 0. So 1 by 1 is 1 again. So which is non-zero and finite. Therefore summation an and bn behave alike. Which test? By comparison test form 5th. But summation bn does not converge. It is divergent by p series test. So therefore summation an is divergent. सो कंबाइन रिजल्ट क्या आ गया, इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट और ग्रेटर देन 1 के लिए भी डाइवर्जेंट, एंड इट इज़ कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 1. Students, that's all with D'Alembert ratio test. We will start the next test based on convergence or divergence of positive term series in our next lecture. So thank you for watching the